Hello and welcome to Bell Hooks Feminist Theory from Margin to Center. This is a critical exploration of intersectionality and liberation from the old and traditional values. Introduction to Bell Hooks is something that she was a prolific author, feminist, and a social activist. And she wrote a number of books, like covering 30 books, topics such as race, class, gender, and the media. And so her work challenged the old traditional orthodox feminist thoughts that the people, whatever they thought about the women's and their limitations and their less importance given to their values. So the key concept is the margin की actually में margin का मतलब क्या है? This refers the marginalized, those pushed to the periphery of the society, जिन्हें समाज के सबसे आखिरी तबके में जो है वो भेज दिया जाता है और उनकी किसी भी बात को वैल्यू नहीं दी जाती है. यहाँ पर बेल हुक्स ने आर्ग्यू किया दैट ट्रेडिशनल फेमिनिस्ट थ्योरी that was created from the perspective of white middle class women, leaving out the experiences of women of color and poor women. यहाँ पर हुक्स ने ये कहा कि जो पुराने रीति रिवाज हैं फेमिनिस्ट थ्योरी के, जो सफेद पोश जो औरतों ने एक नियम बनाए, नियम कायदे कानून बनाए कि जो मिडिल क्लास वुमेन है और उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर नहीं करा गया, उन्हें कलर और उनकी गरीबी के हिसाब से तोला गया, उनकी बातों को ज्यादा समझा नहीं गया. सो शी आर्ग्यूज दैट कंसेप्ट कि हम जो मार्जिनलाइजेशन है, जो मार्जिनलाइज जो पुअर वुमेन है, उनकी बात को कौन रखने वाला है, हु विल बी द वन पर्सन हु इज गोइंग टू ब्रिंग आउट द वॉइस ऑफ द पुअर पीपल. So the center is that this is the dominant societal group. जैसे कि हम देखते हैं कि जब समाज के अंदर एक काफी तबके होते हैं, एक उच्च श्रेणी है, फिर मध्यम वर्ग है, और फिर एक सबसे नीचे जो है वो एक ग्रुप है, और दैट इज द जो डोमिनेंट ग्रुप यहाँ पर सबसे ज्यादा काम करता है, जो लोगों को ऑप्रेस करता है, दैट इज द पावरफुल एंड द प्रिविलेज्ड पीपल हु टेक एडवांटेज ऑफ द पुअर मेन. सो ट्रेडिशनल फेमिनिज्म फोकस्ड ऑन अचीविंग इक्वालिटी. यहाँ पर बात हुई दैट शी स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर द इक्वालिटी, द टर्म्स विद इन द एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर, कि उन्हें भी वो बराबर से अधिकार मिले, जैसे कि हम कहते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, वोट, एवरी वन कैन गिव द वोट. एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को भी सुनने की कोशिश करी और इस पर आवाज उठाने की उन्होंने बात करी. वेयर हुक्स बिलीव्ड, जहां पर उनका विश्वास था दैट शी वाज फ्लॉड बिकॉज द स्ट्रक्चर वाज इनहेरेंटली ऑप्रेसिव. क्योंकि जब बात होती है इक्वालिटी की, जब बात होती है इक्वल राइट्स की, इक्वल वैल्यूज की, तो कहीं ना कहीं जो है वो गरीबी या जो सबसे नीचे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जाती है. सो दिस इज the voice she wanted to raise, ki at least listening to the people and trying to get the viewpoints of the people coming from every section of the society. So the main argument was from margin to center, कि हमारी approach जो है वो margin से लेकर हम center तक आ जाए, that we must maintain the balance between the good and bad, balancing between the high society and the low society. Okay, so the title of her 1984 book was Feminist Theory from Margin to Center. In her core thesis, so she argues, वो कहती है that to create a true liberatory feminist movement, कि अगर हमें एक सही जो आजाद फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो so the voices and the experiences must be heard for the margins, and that must be moved to the center of the discussion, that they should also be a part, they should also be the category that should be called and question, and they can give the answers for their own rights, and they can raise their voices with full freedom and liberty. So the point is that every corner must be in the center to raise their expressions and their true thinking. So the what was most challenging for the white feminism, यहाँ पर अब क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाइट और ब्लैक के बीच का जो एक बीच में एक जो गैप है, जो गल्फ बन रहा है, वो क्या था सबसे ज्यादा चैलेंजिंग. सो हुक्स क्रिटिसाइज दैट व्हाट शी कॉल्ड व्हाइट फेमिनिज्म फॉर इट्स फेलियर acknowledge the unique oppressions faced by the women of color. यहाँ पर बात होती है कि जो औरतें जिनका कलर व्हाइट नहीं है, जो मिडिल क्लास को बिलोंग करती हैं और जो गरीब हैं, तो वो
क्या चीज है वो व्हाइट फेमिनिज्म क्यों नहीं समझ पा रहे? बिकॉज women आर हैविंग द सेम, दे आर हैविंग द सेम एक्सपीरियंसेस, चाहे वो व्हाइट है, चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो कोई भी कलर है, वो लोग हमेशा कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू एक्सप्लोर, they feel the same experiences just as childbirth, they face the same problems, that is a financial crisis. So this includes issues like racism की जब हम बात करते हैं, which are not experienced by white women, जब सफेद औरतों ने, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो व्हाइट वुमेन है, उन्होंने कभी भी इस तरीके के ऑपरेशन को जो है वो फील नहीं किया था. सो दैट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन फ्रॉम बाय बेल हुक्स कि ये चीज सिर्फ ब्लैक वुमेन ही क्यों क्रिटिसाइज करें. अगर आपने कभी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, you can see that most of the experiments have been taken on only black women. और जब आप इस चीज को देखते हैं, you can see the natural the actual facts कि सारे जो experiments थे, चाहे वो medical से related थे, चाहे वो कहीं पर भी entertaining से थे, वहां पर black women को जो है हमेशा focus किया जाता था, उनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था, just to be a bell, हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरीके का एक entertaining object जो है बन गए थे. And black women were treated as the commodity just to raise money for the white people. So that was the biggest challenge of the white feminism, जहां पर बेल हुक्स ने अपनी बात को कहने की कोशिश करी. So the importance of the intersectionality, अब हम बात करते हैं अगर intersectionality की, so Hooks was a key figure in the development of intersectional thoughts, कि वो ये सोचनी थी कि क्यों ना सेक्शन टू सेक्शन विचारों को देखा जाए, कहाँ पर हम अपनी बात को अच्छे से कह सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस अवर वॉइस इवन बिफोर द टर्म वाज वाइडली यूज्ड. जब तक ये इंटरसेक्शनलिटी की टर्म नहीं आई थी, उससे पहले ही बेल हुक्स ने, शी वांटेड टू हैव द explanation of this intersectionality word as a term. So this was the idea that multiple social identities just like class, race, gender, they can intersect, आपस में बात करना, आपस में अपनी चीजों को शेयर करना, and create some unique forms of discrimination and privileges also. बात ही सोशल आइडेंटिटीज की, हम जब मल्टीपल आइडेंटिटीज से मिलते हैं, वेन एवर वी मीट टू अ पर्सन, हम हमेशा कभी भी अपनी क्लास के साथ बात नहीं करते हैं. बट द थिंग इज कि हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट्स ऑफ द पीपल, जब हम दूसरे लोगों का माइंडसेट्स कैसे समझ पाएंगे जब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे. और जो हम ये देखते हैं कि यूनिक फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की किस लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन होता है और प्रिविलेजेस किनको ज्यादा मिलती हैं, हाउ वी कैन जस्टिफाई, unless we are going to talk to them, unless we are going to have an interaction place for them. So it is really become difficult to understand the psychology of the person who is standing in front of you. So the importance of intersectionality is very much asked by bell hooks. So beyond gender we can have the role of the class as well. So hooks emphasize करती है that class oppression is just as crucial as gender and race, कि ऑपरेशन जब आपको कोई दबा रहा है तो वो भी एक जेंडर और रेस से बाहर बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाता है. कैसे? क्योंकि हम ये देखकर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि उसका जेंडर क्या है या वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, बट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इन एवरी लेवल ऑफ द each level of the society. So she pointed out, उसने कहा कि that poor women, जो गरीब औरतें हैं, regardless of their race, चाहे वो किसी क्लास को बिलोंग करती हैं, they each and every women face struggles in their life and that is ignored by the mainstream feminist movements. Feminist movements की जब हम बात करते हैं, they often talk about their rights, their own responsibilities, their own experiences, and they want to have the facilities from each एरिया. बट यहाँ पर जो चीज एक प्रिविलेज्ड वुमेन को मिल रही है, जो एक हाई क्लास वुमेन उस चीज को एंजॉय कर रही है, तो वो चीज एक पुअर वुमेन क्यों एंजॉय नहीं कर सकती है? दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय बेल हुक्स. So she defined the role of patriarchy as well, and she said that she defined patriarchy as a system of male domination, जहां पर आदमियों का जो प्रभुत्व होता है, जो नुकसान पहुंचाता है both men and women को. Okay, if a man is not focused towards what he's going to get, और उसको क्या चाहिए और वो क्या चाहता है, what he actually wants from the people, from the society. So the thing is that male domination is the term different. Male domination can be seen in each and every area. बट जब वो मेन और वुमेन के साथ ये डोमिनेशन करता है, तो वहां पर समाज को नुकसान भुगतना ही पड़ता है. क्वेश्चन इज, शी बिलीव, वो मानती थी दैट डिसमेंटलिंग पेट्रार्की रिक्वायर्ड मेन टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट जस्ट द प्रॉब्लम. जब आप सिर्फ मेल डोमिनेशन के अंदर क्या है कि क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द अदर पीपल,
दूसरे लोगों के लिए समस्याओं को खड़ा करना, लेकिन सोल्यूशन हमारे पास है नहीं. सो द वॉइसेस मस्ट बी हर्ड, वेदर इट इज अ वॉइस ऑफ अ मैन, वेदर इट इज अ वॉइस ऑफ अ वुमेन. दे शुड हैव द सिस्टम जो सही है, बिकॉज इफ वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी एंड इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली, एक परिवार की तरह होता है समाज, तो समाज में हर तबके को अपनी बात कहने का तरीका जो है वो पता भी है और होना भी चाहिए. So that is for today, and tomorrow we will continue the same. So if you like my channel, please do subscribe and share to the maximum. That is Dr. Pallavi. Literature, keep it simple. And we are having a podcast channel as well, Litgen Lovers for literature lovers. So you can go for that on Spotify as well. So thank you for today. Let's meet tomorrow.